एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज के वीडियो हम कंटिन्यू करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर के इंडायरेक्ट टैक्स लॉ के सारे नोट्स के साथ। आज के वीडियो में बात करेंगे, इससे पहले सारे यूनिट्स के मैं नोट्स ऑलरेडी दे चुका हूँ। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 अभी कंप्लीट होने वाला है पूरी तरीके से। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे जाके वीडियोस देख सकते हो, और अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मैं सारे के सारे नोट्स आपके साथ शेयर कर दूँगा। आज बात करेंगे ऑफेंसेस के बारे में। यहाँ पे शॉर्ट नोट ऑन ऑफेंसेस, तो इसको अच्छी तरीके से देखिए, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 ऑफ द जनरल सेक्शंस एक्ट 1897 defines offences as any act or omission made punishable by any law for the time being in force. Full stop. Section 2 subsection N of criminal procedure code defines offences as any act or omission made punishable by any law for the time being in force. Full stop. Every fiscal statute requires the SSC to comply with various provisions of the act. Full stop. These provisions relate to obtaining of registration, classification of products, computation of tax liability, payment of taxes, filing of return, availability of credit, etc. These activities are required to be performed by the taxable person within the period specified in the provisions of the statute. Full stop. Penalty in any law means a punishment, whether by way of fine or otherwise, like retention of goods, imprisonment, detention and confiscation of goods or convenience, etc., for committing any offences on for failure to perform any act which is required under provisions of law. The GST law envisages two types of punishments. They can be simultaneous or concurrent. Number 1 is civil liability. Penalty for violation of statutory provisions involving a penalty of money and confiscation of goods. Full stop. This is a civil penalty and can be adjusted in departmental adjudication. Full stop. This penalty can be imposed by departmental authorities. Number 2 is criminal liability. Criminal punishment is of the imprisonment and fine, which can be generated only in a criminal court after prosecution. Full stop. These are provided in GST law. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट इन जीएसटी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट 2017, ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड और फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड, टैक्सेस पेड, रिफंड क्लेम्ड एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, एंड टू assess his compliance with the provisions of this act or the rules made there under. उसके बाद देखिए, the objectives of audit under GST law is twofold. Number 1 to prevent revenue leakage and number 2 is to ensure compliance of law. उसके बाद देखिए, these may be discussed as under section subsection prevention of revenue leakage. The prevention of revenue leakage implies the collection of correct amount of taxes and also to allow appropriate refund and input tax credit. These objective of audit can be observed by the verification of correctness of the following. Number 1 taxes paid, turnover declared, refund claimed, ITC availed. उसके बाद देखिए नंबर बी, टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉ देयर आर पेनल्टी ऑफ प्रोविजंस अंडर जीएसटी व्हिच आर टू बी कंप्लाइड विद बाय द रजिस्टर्ड पर्सन. सिंस जीएसटी इज ए सेल्फ असेसमेंट बेस्ड टैक्स सिस्टम, देयर इज ए नीड टू असेस वेदर द टैक्स पेयर हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स. फुल स्टॉप. ऑडिट इज द बैकबोन ऑफ अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव. ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट. उसके बाद ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा.